गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? स्वागत है आपका। पराठे की खुशबू आ रही है, बन भी रहा है आलू का पराठा भैया। हाँ, एक काम करो, पानी देखो वहाँ लगा है, गर्म हो गया बेटा। मैं काम कर रहा हूँ। अभी काम कर रहे हो? हाँ, इसीलिए तो काम कर खा लूंगा, फिर मैं जल्दी वापस काम पे लग जाऊँ। काम पे नहीं बेटा, टाइम ना लेट नहीं करना है स्कूल अरे ड्रेस फटाक से पहन। ठीक है। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय भैया, थैंक यू सो मच। आकाश, ये आकाश, उनको भी जगाओ बेटा, फास्ट थोड़ा उठे वो लोग। लेट हो जाता है स्कूल का। आराम से उठाओ बेटा, आराम से, रोने लगेंगे अभी।
ये आकाश, आकाश, ये आकाश, ये 4 साइज की सीट निकाल देना। तो कोई सा कलर, इनकी एक्टिविटी है आज। कलर कोई भी हो, उसी फोन में देख लेना, मैसेज आया है पेरेंट्स ग्रुप में, देखना। चुप रहो, खा लो फास्ट। जाओ पानी मिला दिया करो, ब्रश कर लो। नहीं खाना है रस, खाना है रस, चाय पीनी है सिर्फ, ठीक है ब्रश करके आओ। गीला नहीं होना चाहिए कपड़ा, ब्रश करके आओ फास्ट।
गिरीश गौतम, गिरीश भारती, शुभ प्रभात बहन, नमो बुद्धाय, जय भीम बड़े भैया जी, थैंक यू सो मच, स्वागत है आपका लाइव में। पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद थोड़ा सा कर लो बेटा, क्योंकि खाली पेट स्कूल जाओगे ऐसे चक्कर कर आ जाए। थोड़ा सा कर लो, जाओ। क्यों, फीवर है? अभी खिलाती हूँ मेडिसिन बेटा। लाइक डन बहन, थैंक यू भैया। कैसे हो बड़े भैया? क्या हो बेटा, क्या होगा बताओ ना। कपड़े अभी दे रहे हूँ, रुक जाओ, हाथ में आटा लगा ना मेरे। चलो तब तक नाश्ता करो, नाश्ता दे दिया ना, थोड़ा सा कर लो, जाओ। और बताइए बड़े भैया, कैसे हैं आप? घर परिवार में सब लोग कैसे हैं भैया? आपकी दुआ और बाबा साहब की कृपा से सब बढ़िया है बहन। थैंक यू सो मच भैया, बढ़िया रहना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय भैया, बहुत जल्दी उठ गए आप, ड्यूटी जाना है क्या आपको? अभी मैं चलता हूँ, नेक्स्ट लाइव में आऊंगा, ड्यूटी का टाइम हो गया है बहन, मुझे पता चल गया आप इतना जल्दी उठ गए। ओके भैया, बाय बाय भैया, बाय बाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम भैया, बाय बाय, थैंक यू। हम भी बच्चों के जा रहे हैं स्कूल ही छोड़ने।
अब स्टोरी लिखने की टाइम हो गई है कि 7:40 हो गया, 6:40 से स्कूल जाने की तैयारी है। ये तू बता, अभी मैं बोलती हूँ तो तू बोलते मत में लड़ती। ये बताना कल सारा दिन क्या किया बेटा? सारा दिन जब से स्कूल से आया हैं? इसके बाद क्या करेगा? जिसको टेंशन होती है ना, बिना काम, बिना बोले बिना कहे सब कुछ करता है। अरे यार फास्ट मोशन थोड़ी है, तो एक साथ काम करना। हमारे ना हिंदी वाली मैम ने ना काम दिया था इंग्लिश का और हिंदी का, तो वो मैंने रात को करी। तुमको टेंशन होता ना, सब कर दिया था ना। उसके से बेटा मैं तो फ्रेंडों को चेक करूंगी। बस तू कही हो कैसा बनाना? अरे अच्छा पर थोड़ा सा अच्छे ये कौन सा होता है लोग ये अच्छे तो अच्छा तो फिर पेट में दर्द हो रही है ये अच्छा नहीं ये ट्राई मत करना ठीक है। खाना खाने खाता क्यों तो मैं जल्दी खाता तो एक बार भी खाने में पेट में बनाना कुछ आता तो बनाना ठीक है और ऐसा बोल सकता है ऐसी कौन सी बीमारी है जो वजह से आप बोलते हो तो पेट में दर्द होता है? खुद ही अपने
जय भीम, नमो बुद्धाय। सोनू भैया थैंक यू सो मच। कैसे हो आप सोनू भाई, कैसे हो? जय भीम, जय संविधान। तबीयत कैसी है सोनू भैया? ते पंखो बंद कर दो कमरवा का, पंखो बंद कर दो।
अभी धूप ना आई, अभी धूप ना आई है। हिम्मत नाश्ता वास्ता करा जा।
नीचे ऊपर
सब भुलाएगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। सुभाष भैया थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक डन, ओके ओके भैया, थैंक यू। आपका कल कमेंट आया था सिस्टर, मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच भैया। कैसे हो सुभाष भैया, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बड़े भैया? नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्ते जी। सेम टू यू भैया। कैसे हो बड़े भैया जी? आप कैसे हो बहन जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप बताइए आप कैसे हो? सब ठीक है बहन जी। ओके भैया, थैंक यू। ठीक ही रहना चाहिए। और बताइए, खाना पीना हुआ कुछ आपका? हम भी ठीक हैं। ओके भैया। खाना हुआ बड़े भैया? तीखा थोड़ा कम होगा ना, है ना? क्योंकि वो नहीं खाते ना, इसलिए तीखा कम किया। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच सुभाष बड़े भैया जी, थैंक यू। ड्यूटी चले गए, कभी रूम पे ही हो भैया? हम अभी ड्यूटी में हैं। ओके भैया, ओके। आपके घर परिवार में सब ठीक है? सब ठीक है बड़े भैया जी, सब ठीक। हमारे घर परिवार में सब ठीक है। आप बताइए, घर पे बात हुई थी आपकी, परिवार में सब लोग बढ़िया है भैया? जय भीम, जय भीम, जय भीम भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया जी। हाँ जी, सभी लोग ठीक हैं। ओके भैया, थैंक यू। ठीक ही रहना चाहिए।
थैंक यू बड़े भैया जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। नहीं मेरे भैया, मैं बताऊं आपका ब्लू नहीं सबका हट गया था, हमारा फोन ना हैंग हो रहा था। मैंने ना एक दिन ना अपडेट किया इसका, सारे जितने थे सबके पर से ब्लू हट गया था। फिर जिन्होंने मेरे लाइव में दोबारा जुड़ा ना, मैं फिर उनको दी। कमेंट भी आपका शो नहीं कर रहा था कहीं, आपने कल मेरे पे कमेंट किया था तो वो शो किया था, मैंने देखा था। मैंने सोचा आपको, मैं कल बहुत बिजी थी, घर में कोई रिलेटिव के आ गए थे लोग, तो मैं खुद ही काम में बहुत बिजी थी। आपने देखा होगा, मैं वैसे ही किचन में काम भी कर रही थी, बात भी कर रही थी। ऐसा नहीं है बड़े भैया, हम आपका ब्लू क्यों हटाएंगे? सबका हट गया था भैया, पूरा टोटल। देखो वीर भैया जी का अभी भी इनको नहीं ब्लू है अभी देखो आ गए वीर भैया जी, इनके भी नहीं है, और जो कि सबके पे था। जय भीम बड़े भैया जी, वीर भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धा। अभी आपकी चर्चा हो रही थी, तब तक आप पधारे हैं। कैसी हो सिस्टर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप बताइए आप कैसे हो? अच्छा जी, कोई बात नहीं बहन जी, हम बहुत परेशान हो गए थे। नहीं बड़े भैया जी, परेशान की कोई बात नहीं है, कि क्या करी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, कमेंट शो नहीं हो रहा था ना? बड़े भैया जी बताओ, वीर भैया जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपका खाना तो 6 बजे हो जाता है, नाश्ता कब करते हो ये भी बताओ ना। और बताओ सिस्टर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो? नाश्ता नहीं करता? अच्छा, डायरेक्ट खाना? हम तो सोचे चिकन मटन का सूप वूप पी के काम चला लेते हो। मॉर्निंग सिस्टर खाना ही खाता हूँ। अच्छा भैया, थैंक यू। अचार कंप्लीट हुआ आपका? अचार कंप्लीट हो गया वीर भैया जी चिकन का? थैंक यू सुभाष भैया, थैंक यू। नाराज नहीं होना सुभाष भैया, सबके पर से हट गया था, हमने जानबूझ के नहीं हटाया था। मेरे घर में सब खाना खाते हैं। अच्छा भैया, अकेले अकेले खा लेते हो तब चलते हो, पूछते भी नहीं हो एक बार। मटन का? अच्छा मतलब सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम आपका मटन ही चलता है ना? मटन मटन मटन, चिकन मटन मटन नहीं। वैसे भी 21 दिन बाद आप ब्लू हट जाता है शायद भैया, ऐसे ही हुआ था क्या? पूरा सबके पर चढ़ गया था।
तो फिर जो जो ज्वाइन हुए ना उसको उसको मैंने दे दिया, आपका भूल ही गई थी। भैया भी चर्चा किए तो मैं आपसे बात हो गई। ओके सुभाष बड़े भैया जी, थैंक यू थैंक यू। यस के इंटरटेनमेंट, जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। सुरेश भैया जी कैसे हो आप? स्वागत है आपका हमारी लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों का। कैसे हैं आप? और हमारी फूल कुमारी सिस्टर जी कैसी हैं? वीर भैया जी सोनू भैया के पास वीडियो भेजे थे कि नहीं भेजे? हम बढ़िया हैं, अपना सुनाइए। आपका चाय नाश्ता हो गया? अभी कुछ नहीं हुआ है, बस एक पराठे खाई हूँ, अभी नाश्ता बाकी। हम आज बहुत खुश हैं बहन जी। क्यों सुभाष बड़े भैया जी, इतना खुशी किस बात की बताओ हमें, ताकि सुन के हम भी खुश होएं। आपकी फूल कुमारी बहन भी बढ़िया है, सब घर परिवार सब बढ़िया है। अपना सुनाइए, आपके घर परिवार में सब सही है? बच्चे स्कूल गए? सब ठीक है भैया, बच्चे गए हैं स्कूल, अब आएंगे 2:30 बजे। मेरा तो परसों ही हट गया था। मुझे वैसे भी ब्लू की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक आईडी से नहीं शो होता है मैसेज, तो दूसरे से आ जाता हूँ। मुझे पता है भैया, लेकिन मैं परसों गई थी जब ना साधना दीदी की लाइव में, आपकी पूरी आईडी खोजा था मैंने, कोई भी आईडी नहीं मिली। तब मैं साधना दीदी से बोली, दीदी वीर भैया जी कहाँ हैं, नहीं आए हैं? तब बोली नहीं सिस्टर सो गए हैं। साधना सिस्टर की लाइव में पढ़ती है। हाँ मुझे पता है किस लिए पढ़ती है, वो भी पता है। थैंक यू सुरेश भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष भैया आप बताए नहीं कि आप इतना खुश क्यों हो, बताओ हमको। बहुत खुश हूँ बहन, बताओ भैया खुशी का कारण। रहेंगे तब तो मिलेंगे। अच्छा आप सुन ही रहे थे। जय भीम सोनू भैया, जय भीम नमो बुद्धाय। अब तक कहाँ थे? कमेंट करके चले गए थे, मैं बिजी थी तो आप भी बिजी हो गए। सोनू पाजी जय भीम नमो बुद्धाय, वीर भैया जी बोल रहे हैं सोनू भैया। जय भीम पाजी। कल तो सोनू भैया वीर भैया जी को फौजी भी बोल रहे थे। सोनू पाजी वीडियो देखा था, समझ आ गया था कि नहीं? बताओ सोनू भैया। पूरा नहीं देखा, इसका मतलब आपका अचार भी कंप्लीट नहीं हो गया। पंजाबी में था। कोई बात नहीं वीर भैया जी, पंजाबी में रहा कोई बात नहीं। सोनू भैया की एक बड़ी वाली दीदी है, वो इनको ट्रांसलेट करके बता देंगे हिंदी में। आज का समाचार मिल गया इसलिए हम बहुत खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष बड़े भैया जी, थैंक यू। इसी तरह आप सभी भाइयों का प्यार मिलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम भी बहुत भाग्यशाली हैं। आपसे बात नहीं हो रहा था, कमेंट नहीं सो हो रहा था ना। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। वीर भैया जी हंस रहे हैं। गलत तो नहीं बोला वीर भैया जी ने? तृप्ति सिस्टर से ट्रांसलेट करवा लेना सोनू पाजी। अरे भैया नाम मत लो, कहीं वो ना पधारी हो फिर आपकी खैरियत नहीं रहेगी। फिर सोच लेना आपका नंबर ना फिर आने वाला है। वीर भैया जी एक बात बताऊं,
इसीलिए रवि भैया को मैंने देखा, रात में ढूंढते हुए आए थे सोनू भैया की लाइव में, पर वो मिली नहीं दीदी, निराश होके चले गए। और सुनाइए कैसा चल रहा है बहन जी? सब बढ़िया भैया, आप सबकी कृपा आशीर्वाद है, हमारे महापुरुषों की करुणा, सब अच्छा है भैया, इस समय ठीक है, सब अच्छे हैं। हाँ जी, मैंने देखा था रवि भैया को रात में सोनू भैया की लाइव में। मैं भी सोच रही थी रवि भैया भी जग रहे हैं, क्या बात है। थैंक यू सुभाष भैया, थैंक यू। रुको लाइव शेयर करता हूँ। अरे नहीं सोनू भैया, गलती से मेरी लाइव शेयर मत कर देना, गलती से भैया, नहीं तो मैं भी परेशान हो जाऊंगी कमेंटवा पढ़ते पढ़ते। ऐसी गलती मत करना, कहीं वीर भैया जी मेरी लाइव छोड़ के भाग ना जाएं, फिर ढूंढना पड़ेगा। मैं तो सो गया था जल्दी। अच्छा, कल दीदी की लाइव नहीं चली थी ना, सरना दीदी की? कल साधना दीदी की भी लाइव नहीं चली थी। अरे थोड़ा आराम से पियो यार, सो कर रहे हो, ठंडी हो जाने दो। वो मेरा पूछ के तंग कर देंगी, मेरा कंचन सिस्टर को, इसीलिए कह रही हूँ भाई। कहीं गलती से पता चल गया ना कंचन सिस्टर के लाइव में वीर भैया जी हैं, फिर सोनू भैया को छोड़कर मेरे पीछे पड़ जाएंगी। फिर पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर क्यों परेशान जिसको हमारा ब्लू हटाकर फिर से नहीं रुलाना बहन जी। नहीं हटाएंगे सुभाष भैया, ऐसी बात नहीं है, मैंने बोला ना सबका हट गया था भैया, नहीं हटाएंगे बड़े भैया। हम आपको क्यों रुलाएंगे भैया, आप लोगों से तो खुशियां हमको मिलती है, हम आप लोगों को रुलाएंगे तो हम खुद ही रोएंगे। समझ आएगा वो, थोड़ा बहुत आता है सोनू भैया, ऐसी बात नहीं है, ज्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। थैंक यू सुभाष भैया। पर वीर भैया जी रहेंगे ना, इनको कहूंगी दूसरी आईडी से आके समझाओ, लेकिन ये दूसरी तीसरी किसी भी आईडी से आ जाएं, वो समझ जाएंगी कि वीर ही हैं। हिंदी भी शॉर्टकट में रहता है। अच्छा, आपको तो हमेशा बोलती हैं सोनू बोल रहे, पता नहीं कैसे कैसे भाषा यूज करती हैं। वो कंचन सिस्टर को बोलेंगी कि मेरे प्राजी को बोलो बात करें। मैं तो सोनू भैया के लाइव में कमेंट पढ़ती हूँ, उनकी हंसी भी आती है, सोचती भी हूँ क्या क्या लिखती हैं। सोनू भैया तो एकदम परेशान कर देती हैं। सच्ची, सोनू भैया खूब कहते हैं, ठीक है मैं बोल दूंगा, ठीक है मैं बता दूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू बड़े भैया जी, सुभाष भैया जी, थैंक यू सो मच। मैं कल साधना सिस्टर बनकर बात कर रहा था सिस्टर से। अच्छा, सोनू भैया की लाइव में मैं नहीं थी, मैं बता देती फिर। सोनू पाजी से पूछो क्या बोल रही थी।
क्या बोल रही थी सोनू भैया? आप भी थी? नहीं वीर भैया जी, हम नहीं थे उस टाइम। हम नहीं थे वीर भैया जी, हम ना अपनी लाइव में थे। कमेंट बेशक जा रहा था, हम पढ़ नहीं रहे थे किसी का कमेंट। जय भीम सुरेश भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू। सोनू पाजी से पूछ लो, आप थी? मैं भैया ना, मेरी लाइव भी उस टाइम चल रही थी जब आप मेरी लाइव में आ गए वहां से। और मैं ना सोनू भैया की लाइव में कमेंट नहीं पढ़ पा रही थी, क्योंकि मैं अपनी लाइव में थी ना, कमेंट दूसरे वाले आईडी से कर रही थी, पर पढ़ नहीं पा रही थी सोनू भैया की लाइव का कमेंट। जय भीम सुरेश भैया, सुभाष भैया, थैंक यू। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगत सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। थैंक यू भैया, थैंक यू। तभी बच गया फिर मैं, हाँ नहीं तो खैरियत नहीं रही होती आपकी। एक दिन बताना पड़ेगा वीर भैया जी, एक दिन ना अब बताना पड़ेगा। आप तो साधना देवी वाली आईडी को पहचान लेती और वीर जी बोल देती। नहीं मैं ध्यान नहीं दी भैया, सच्ची। कहीं मैं वीर जी बोले, मैं सच्ची में वीर भैया बोलती, फिर सीधे सी वो पहचान लेते। शुक्र मनाओ कि मैं कमेंट रीड नहीं करके बोली नहीं, नहीं तो आपकी सारी पोल खुल जाती। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। बिल्कुल भैया बिल्कुल, थैंक यू सुभाष भैया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मैं साधना सिस्टर बनकर बात कर रहा था। हाँ ये तो सोचो ना, शुक्र मनाओ मैं बोली नहीं कुछ। वो बोल रही थी कि साधना सिस्टर आप वीर जी को बोलो कि बात करें और अनब्लॉक करें। उनको पता नहीं है कि हम वीर जी से ही बोल रहे हैं। हाँ? कबीरा जब तू पैदा हुआ जग हंसे, तुम सोए ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसे जग रोए। सही बात है भैया, थैंक यू, बहुत अच्छा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। राइट भैया राइट, थैंक यू सो मच। अब सोनू पाजी की लाइव पर पहले कमेंट चेक करके जाना पड़ेगा। ये तो शुक्र मनाओ, सिर्फ सोनू भैया की लाइव को उनको पता है, और बाकी सबकी हो जाएगी पता है ना, तो फिर आप कितना छुपते फिरोगे बताओ। जय भीम सुभाष बड़े भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच। कब तक भागते फिरोगे वीर भैया जी?
सोनू पाजी की लाइव पर अपनी आईडी से जाना ही नहीं है अब मुझे। बिल्कुल नहीं जाना भैया। एक आईडी आपकी कौन सी थी, मैं तो भूल ही गई नाम। काला भूत की क्या था वो वाला, उसी से जाना। थैंक यू भैया। हम अभी ड्यूटी में हैं, मशीन पर हैं जी, और आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं बहन जी। नहीं भैया, आप मशीन उशीन पे काम कर रहे हैं, प्लीज आप ध्यान से। सपोर्ट की उतनी आवश्यकता नहीं है सुभाष भैया, बट आप अपना ख्याल जरूर रखें। सबसे पहले अपना स्वास्थ्य सुभाष भैया। थैंक यू सो मच। काला भूत, हाँ मेरी आईडी है काला भूत, काली मुख गुलकंद गोरा काला भूत से आना, गोरा ढोन से। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। काला डॉन, गोरा डॉन, काला भूत, काली गुलकंद, काली चरण। थैंक यू सो मच भैया। ये सब मेरी आईडी है, हाँ इससे आओगे तो सही रहेगा, वो शायद ना पहचान पाए। अब अपनी ओरिजिनल आईडी से जाना नहीं है सोनू भैया की लाइव में। और बताओ, सब बढ़िया है भैया, आप सुनाओ। रवि भैया कहाँ चले गए हैं? बहन जी, जिंदगी जीने में और जिंदगी काटने में बहुत सारे अंतर हैं जी बहना। बिल्कुल राइट भैया, मैं समझती हूँ आपकी भावना, मैं सब समझती हूँ। खाना हो गया सिस्टर जी, खाना भैया बनेगा अब 12-1 बजे, क्योंकि बच्चों का जब लंच तैयार करते हैं ना सुबह, फिर वहां से आने के बाद हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाते हैं, फिर वो ड्यूटी से आते हैं, वो कर लेते हैं, तो इतना जल्दी खाना कोई खाता नहीं है। जब बच्चे आते हैं ना, तब फिर वो गरम गरम खाना सब लोग खाते हैं, ठंडा हो जाता है तो नहीं खाते हैं, इसलिए 12-1 बजे बनाती हूँ, 2:30 बजे तक वो आते हैं। रवि पाजी अभी सो रहे होंगे। हाँ भैया, तबीयत ठीक नहीं है उनकी भी, शायद फीवर था, रात में जगते भी है ना काफी भैया। और सोनू भैया की भी तबीयत ठीक नहीं है। और बताइए भैया, भाभी कैसी हैं? प्रथमवीर बाबू कैसे हैं? हाँ जी, पूछ रही हूँ भाभी कैसी हैं, प्रथमवीर बाबू कैसे हैं, सब ठीक है भैया?
ठीक है सिस्टर, आपका साधना सिस्टर से कॉल करें। बिल्कुल कभी करना भैया, दोपहर में जैसे करना होगा ना, तो मैं 10 बजे से 12 बजे के बीच में फ्री हो जाती हूँ। फिर उसके बाद में नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं ना फिर 2:30 बजे के बाद बहुत बिजी हो जाती हूँ। आज 11 बजे अगर आप और सिस्टर फ्री हो तो। मैं फ्री हूँ, अब दीदी से पूछ लेना। 11 से 12:30 बजे तक मैं कर सकती हूँ, फिर उसके बाद बिजी हो जाऊंगी। हाँ जी, ओके भैया। दीदी से पूछ लेना टाइम क्या हो रहा अभी। अभी तो 10 नहीं बजे हैं। मैसेज डाल दिया है। ओके भैया, दीदी देखेंगी, खुद ही रिप्लाई करेंगी। अभी तो खुद ही बिजी होंगी खाना पीना बनाने में। सो रही होंगी इतने टाइम भैया, क्यों सोएंगी? हमें तो नहीं लग रहा सो रही होंगी, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, स्कूल जाते हैं। लेडीज को इतना आजादी ऐश नहीं होती भैया कि वो 10 बजे तक सोए। उसको तो 4 बजे या 5 बजे लास्ट है कि उठकर आंख खोलते ही पहले मुंह धो किचन में सीधे। सही बोला ना वीर भैया जी, बताओ। आप लोगों का ड्यूटी जाना रहेगा, टाइम हुआ। हाँ, ड्यूटी जाने से आधा घंटा पहले उठना है। खाना पैक हो गया, कपड़ा डालना निकाल लेना है। हम लोगों को टेंशन होती है, लोग ड्यूटी जाएंगे, खाना टाइम से बना दो, बच्चे स्कूल जाएंगे उनका तैयार कर दो। साधना सिस्टर तो गजनी है। कहीं दीदी आपको सुन ली ना, फिर खैर नहीं आपकी है। हम आपका एक तरफा करते हैं ना, आपके साथ हमेशा रहते हैं ना, इसीलिए आप कुछ भी बोल देते हो। आपको पता सिस्टर तो वहां जाके बताएंगी नहीं, पक्ष क्योंकि आपका लेती हूँ, सब भूल जाता है। अच्छा भैया, नहीं सुन सकती सिस्टर, क्यों भैया? क्यों नहीं सुन सकती बताओ? आपको इतना उम्मीद है कि नहीं सुन सकती हैं?
अभी तो सो रही होंगी, ऐसा कुछ नहीं, कहीं आप सो रही होंगी, कहीं वो लाइव में ही हो। कहीं दीदी को पता चला ना। हाँ वीर जी, हमारी क्या क्या बुराई करते हो सिस्टर की लाइव में जाके। सीधे बोलेंगे। उनका नेट बंद है। अच्छा, तभी तो। आपको पता हुआ आ नहीं सकती अभी, जो बोलना है बोल दे। थैंक यू भैया, थैंक यू। दीदी वैसे गुस्सा नहीं करती हैं किसी बात का। पंजाब में मौसम कैसा है भैया, ठंडी ज्यादा है कि नहीं? बताना वीर भैया जी। करके देख ले सिस्टर गुस्सा। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं, मना लेंगे। अच्छा। हाँ, इतनी उम्मीद है कि आप लोग मना लेंगे, क्योंकि आप लोगों की कॉमेडी भी आती है। इतनी नहीं है। नहीं है, मुझे पता है आप लोगों को कॉमेडी भी अच्छे से आती है। रोते हुए इंसान को आप लोग हंसा देते हैं। कौन कॉमेडी करता है? आप भी करते हो, रवि भैया भी करते हैं। रवि भैया ज्यादा ही करते हैं। मैं तो गुस्से वाला हूँ। ऐसा नहीं है, ये झूठ है, इसको कभी नहीं मान सकती। मैं नहीं मान सकती कि आप गुस्से वाले हो, कभी नहीं। साधना सिस्टर तो बोलती हैं मैं हूँ, पर ये सिस्टर तो नहीं बोलती ना। हम्म, हम तो नहीं बोलते ना भाई आपको, ना ही कभी बोलेंगे, ना ही कभी ऐसी उम्मीद है। साधना दीदी तो ऐसे प्यार प्यार में बोल देती हैं, गुस्से में थोड़ी बोलते हैं। जितना आप दीदी को मानते हैं ना, उससे 2 गुना दीदी आपको भी मानती हैं।
साधना सिस्टर अच्छी हैं, बिल्कुल अच्छी हैं भैया। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हैं, बहुत बहुत। दीदी के अंदर किसी चीज का एटीट्यूड नहीं है। सबसे ये अच्छी लगती है बात। बहुत लोगों का ऐसा होता है ना भैया, मैं बहुत लोगों को ऐसा देखी हूँ, जो लोग थोड़ा सा यूट्यूब पे उभर जाते हैं ना, तो वो ना अपने आप को कुछ अलग तरीके से समझते हैं। पर साधना दीदी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन क्या है। वो सबको एक जैसे समझती हैं। किसी से वो नहीं है, उनके अंदर घमंड नहीं है किसी चीज का कि नहीं मैं थोड़ी सी वायरल हूँ या कुछ हूँ तो फिर नमस्कार। ऐसा नहीं है। ये बात तो है, सिस्टर बहुत मानती हैं अपने बड़े भाई की तरह। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। और सब बढ़िया। मैं तो कितना बोल जाता हूँ गुस्से में, पर दीदी तो नहीं बोलती ना भैया। पर सिस्टर ने कभी मेरे को बोला ही नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। शनिचर के यही तो है भैया, और है क्या। इंसान कभी कुछ लेके आया ना कुछ लेके जाएगा। इंसान की इंसानियत उसके साथ जाती है। अपने इंसानियत तो अपने अच्छे होने से दुनिया में चर्चित होता है। नहीं तो आपको हम नहीं जानते, दीदी नहीं जानती थी आप कहाँ रहते हो, लेकिन आपका ऐसा व्यवहार है जो आपको धीरे धीरे सब जानती हैं। और सारी बहनें सोचती हैं आप जैसे भाई लाइफ में आए। सभी लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, बोलते भी हैं कि हमारे लाइफ में क्यों नहीं आते हो, आओ। अपना एक व्यवहार है ना, और क्या भी है। सिस्टर में घमंड नहीं है, बिल्कुल नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है। सिस्टर में घमंड नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भैया। सिस्टर में बिल्कुल भी घमंड नहीं, किसी चीज का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भैया, ये बात राइट है। दीदी सबके साथ मैनेज करती हैं, चाहे वो कोई अपने आप को छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ भी हो, वो ऐसा समझती नहीं है किसी को। होना भी ऐसे चाहिए भैया, ऐसे ही चाहिए सबको। क्योंकि जो अपने समाज के तौर पे काम करता है ना, तो वो छोटा बड़ा नहीं देखता है, कौन वायरल है कौन नहीं है। वो सबकी भला चाहता है, नहीं सबको ले जाना है आगे। तो दीदी के अंदर वो चीज है, वो सबके साथ करती है। नहीं, मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि सिस्टर कोलैब करना है, कभी नहीं कहा कि किसके साथ है। सिर्फ पूछता हूँ सिस्टर फ्री हो तो कोलैब करना है। बिल्कुल भैया,
इसीलिए हम लोग भी तो दीदी को मानते हैं। जब तक लाइव में नहीं जाते अच्छा नहीं लगता, चाहे 10 मिनट के लिए जाए, चाहे 5 मिनट के लिए जाए, लेकिन जाते ज़रूर हैं। दीदी सबको सबसे हँस के ही मिलती हैं। इतना ट्रस्ट है, बिल्कुल भैया बिल्कुल सच्ची। शायद आप लोग जब से नहीं जुड़े उससे पहले से हम जुड़े हैं। पर बताया ना आपको, हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम की वजह से हम बिल्कुल भी किसी के लाइव में आना जाना, अपना खुद का चैनल नहीं चलाते थे। नहीं तो हम बहुत पहले से जुड़े हैं दीदी के, शना दीदी के। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू। सोनू भैया सिर्फ हंसते फिरते हैं, देखो तबीयत खराब है फिर भी हंसी है फेस पे। हम होते तो रजाई उजाई उड़ के एक कोने में रोते सोनू भैया। खाना खाए सोनू भैया? खाना हुआ आपका? करेला का जूस पीना? अरे भैया माफ करो, करेला का जूस पियो, हमारे बस का तो नहीं है। जो खाए पिए रहेंगे वो भी बाहर आ जाएगा जय भीम, नमो बुद्धाय। फूल कुमारी सिस्टर जी जय भीम। सोनू भैया से पूछ रही हो आपका खाना हुआ कि नहीं? मैं पूछ रही हूँ। सोनू भैया से भी पूछा, आपसे भी पूछा सिस्टर, आप भी बताओ आपका खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ? मुझे तो बहुत टाइम नहीं हुआ है सिस्टर से जुड़े। कितना टाइम हुआ भैया? आपको भी तो 3-4 मंथ से ज्यादा ही हो गया होगा। जय भीम सिस्टर, जय भीम। कैसी हो कंचन सिस्टर? बच्चे कैसे हैं बताइए? सब ठीक हैं फूल कुमारी सिस्टर, सब ठीक हैं बहन। बच्चे गए स्कूल, हम ही बचे हैं। अभी तो फ्री हैं, फिर 12:30 बजे के बाद तो फिर किचन में, फिर कंटिन्यू 9 बजे ही निकलना है। 6 मंथ्स, अच्छा। ओके भैया, थैंक यू। पर हम आपको तब नहीं जानते थे ना, हम भी जाते थे ऐसे 10-5 मिनट कमेंट करके आ जाते थे, पर उतना किसी को नहीं जानते थे ना। सिंह चढ़ा हो गया किससे भैया? हम दोनों तो अभी चाय पी रहे थे, अभी तो चाय पिया है, खाना नहीं खाया है। खा लो सिस्टर, खाना भी खा लो। भैया ड्यूटी नहीं गए हैं क्या, घर पे ही हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय। फूल सिस्टर आज तो फूल भेजे ही नहीं सोनू भैया, फूल कहाँ रख दिए? बहुत कड़वा है, शक्कर मिला लो। सोनू भैया जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको भी हमारी तरफ से फूल कुमारी सिस्टर जी बोल रही हैं। ड्यूटी अच्छा अभी भेजे वो? रोज तो कमेंट के साथ साथ आ जाता है फूल कुमारी सिस्टर भी हंस रही है थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ड्यूटी जा रहे हो क्या सोनू भैया, कि सिर्फ जूस पीने गए हो? अभी ड्यूटी गए हैं, निकल के अभी गए हैं। अच्छा सिस्टर, यही तो होता है ना, सब ड्यूटी आना जाना, तैयार करना, खाना पीना। मैं इतना जल्दी खाना नहीं खाती हूँ, 2-3 खाना खाती हूँ। वही हमारा भी नियम है सिस्टर, 3 बजे से पहले नहीं, हम लोग भी नहीं खाते हैं, क्योंकि 2:30 बजे बच्चे घर में एंट्री करते हैं, फिर हाथ पैर धोते हैं, यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, 3 बज जाता है, तब साथ में सब लोग बैठ के खाते हैं हम भी।
अगर धर्मेंद्र भाई की लाइव पर ना लड़ते तो शायद मैं साधना सिस्टर की लाइव पर कभी ना जाता और ना ही अभी आपसे बात कर रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल भैया, सही बात है, आपकी बात बिल्कुल राइट है। लेकिन ये होता है ना भैया, जिससे मिलना होता है ना किस्मत में, इंसान एक उसके पीछे एक कहानी हो जाती है, किसी न किसी तरीके से मिलना हो ही जाता है। अक्सर देखा है ऐसा। 2-3 कौन कौन सा खाना? दो तीन नहीं लिखा है। 2-3 कौन कौन से खाना? 2-3 कौन कौन सा खाना खाती हो सिस्टर? सोनू भैया पूछ रहे हैं, बताओ। दाल चावल रोटी सब्जी, यही, और क्या? जो आप लोगों को पसंद नहीं है। फुल कुमारी सिस्टर हंस रही हैं। नॉनवेज खाती हो सिस्टर? फुल कुमारी सिस्टर, आप खाती हो नॉनवेज? साधना सिस्टर तो खुद बोलती हैं कि मुझे चैलेंज करके अपनी लाइफ पर लाई थी। अच्छा, मेरी लाइफ पे आओ, फिर बताती हूँ आपको, यही ना? दिल्ली में 2-3 बजे यही खवाई होती है खाना। हाँ सिस्टर, ये तो बात सही है, आपकी बात बिल्कुल राइट है। खाने वाले खा लेते हैं बहन, पर हम लोग बच्चों का वेट करते हैं ना। खाने वाले तो बहुत लोग ऐसे हैं, खा लेते हैं, बच्चों का नहीं सोचते हैं। बच्चे स्कूल में खा लेंगे, वो खा पी के एकदम फ्री हो जाते हैं। आप लोगों के ना बात के पतंगड़ बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। हाँ सिस्टर, अभी सही। सोनू भैया कुछ ज्यादा ही बनाते हैं। सोनू भैया कहाँ गए? जंग अगर लड़ना है तो फूल कुमारी सिस्टर तैयार हैं, आओ। हमने बोला है 2-3 खाना खाते हैं, और सोनू भैया बात कर रतनगढ़ बना रहे हैं। घमंड तोड़ती हूँ आपका मेरी सीधा सीधा चैलेंज। वीर भैया जी की तब तो सीधा सीधा चैलेंज एकदम। अब वीर भैया जी कहाँ पीछे रहे कि चैलेंज हो रहा है तो पहुंचना है। नहीं, मैं नहीं खाती हूँ सिस्टर, ऐसी चीज हम नहीं खाते हैं। ओके सिस्टर, थैंक यू, खाना भी नहीं चाहिए। वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, 2 दिन कौन सा मेरे को घमंडी बोल रही थी सिस्टर। अच्छा, आप बोला करो ना दीदी से, आप नहीं बोलती हो क्यों? सच्ची वीर भैया जी, ये चीज मानी गई है कि जैसे जिससे ज्यादा लगाव होता है ना कोई सा, उसके पीछे कोई न कोई एक कहानी जरूर जुड़ी होती है ना? थैंक यू फूल कुमारी सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। सही बात है, सच्ची भैया, मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं, जिससे ज्यादा लगाव होते है उसके पीछे कुछ ना कुछ एक कहानी बन जाती है कि हम कैसे मिले, कैसे, क्या चीज, ये चीजों की बात हो जाती है।
कभी कभी ऐसे तो जैसे शादी विवाह में जब होते हैं तो उसमें भी ऐसे कुछ अलग हो जाता है जो यादगार हो जाता है। अभी कोई हम सबको देख कर नहीं कह सकता कि लड़ाई की वजह से मिले थे। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही बात है। कहानी नहीं बनेगी तो बात कैसे अच्छा सोनू भैया, एक दूसरे का घमंड तोड़ने के लिए मिले थे। घमंड टूट गया दोनों साइड से कि नहीं? अभी बताओ। 2-3 खाने में रोटी होती है, सब्जी होती है, दाल होता है, 4 बाल होता है, बहुत सारे खाने हैं। बोलो सोनू भैया, ऐसा खाना खाना है? दीदी मेरा और मैं सिस्टर का। होना भी चाहिए भैया। थैंक यू सो मच। सोनू भैया खाना खाने आ जाओ। वीर भैया जी हंस रहे हैं खूब तेजी से। वीर भैया से ज्यादा तो हम हंस रहे हैं सिस्टर। पर घमंड था ही नहीं दोनों में, सिर्फ गलत फहमी थी। सच्ची बात है भैया, सच्ची बात। गलत फहमी ऐसी होती भी है कभी कभी। मैं भी एक गलत फहमी में किसी के नजर में पड़ गई थी, वो भी थे भारती भाई। मुझे ऐसे डराए कि मैं फिर सोचती रह गई, वो भी सोनू भैया की लाइव में। सोनू भैया हंस भी रहे हैं। याद है कि नहीं सोनू भैया, भारती भाई जब हमको हड़का रहे थे। सिस्टर अब आप सबसे घर की तरह लगाव हो गया है। बिल्कुल भैया, हम लोगों को भी ऐसा ही फील होता है। हम लोगों को ये जब तक नहीं देखते हैं ना, जैसे अजीब सा लगता है। जब तक बात नहीं होती है ना, लगता है कि नहीं हक से लड़ते हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल होना भी चाहिए भैया, ऐसे एक दूसरे को समझना अच्छा लगता है। कोई जब मिल के चले, एक दूसरे को समझे तो बहुत अच्छा होता है। आज दिन भर कड़वा बोलूंगा क्योंकि करेला जूस पी लिया हूँ आज। नहीं भैया, कड़वा नहीं बोलना। सबसे बोल लेना पर हमसे नहीं। हमसे कड़वा बोल दोगे ना, फिर हमारे आंखों से फिर आंसू नहीं रुकेंगे। आपको पता है ना, या हम गुस्सा होके कड़वा बोल दिए फिर हमारी लाइफ में भी कभी नहीं आओगे। बोलो सोनू भैया। आप तो करेला का जूस पी के कड़वा बोलते हो, हम तो बिना कुछ पिए कड़वा बोलते हैं। बोलो, एक्सेप्ट है।
सोनू पाजी, बाबा रामदेव ने बोला था कम पीने के लिए करेला का जूस। सच में भैया कभी कभार हो जाता है। सोनू भैया मैं देखती हूँ बराबर पीते हैं। हंस रहे हैं। लव कुश प्रताप, जय भीम नमो बुद्धाय भैया, स्वागत है आपका हमारी लाइव में। कैसे हैं आप? हमको गाली भी दोगे तो भी मैं आऊंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता भैया, कभी भी जिंदगी में नहीं हो सकता। ये बहन जिसको मानती है दिल से मानती है, नहीं तो फिर मानती नहीं है। आपसे लगाव अपने सगे भाई से बढ़ के हो गया, ऐसी बात नहीं है सोनू भैया, एक कभी अपने माइंड में मत सोचना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। थैंक यू फूल कुमारी सिस्टर, थैंक यू। बाय बाय सिस्टर, बाय बाय। पाजी आप भी पियोगे करेला का जूस? भैया पी लेंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर चिकन का अचार नहीं खाए होंगे तो फिर जूस पी ही लेंगे। सही बोला ना, क्योंकि भैया को अचार ज्यादा पसंद है। हाँ आकाश पापा, इनकी आदत है, ईयरफोन कान में रहेगा फिर सो जाएंगे ऐसे फोन ऑन लेके। नाना मैं नहीं पीता। मैंने कहा ना सोनू भैया, सिर्फ भैया बस अचार पसंद करते हैं। करेला खा लूंगा।
कच्चा करेला खा लोगे वीर भैया जी? कच्चा करेला खाते हो क्या? कच्चा खाना है शायद, वीर भैया जी का फेवरेट है। अभी बोलेंगे ना ना बहन। ना ना भरा हुआ, अच्छा भरा हुआ करेला, भरवा करेला खाते हो, कच्चा नहीं। भरवा करेला सबको पसंद है। कच्चा खा के हमको बहुत ज्यादा ही ठंडी लग रही है आज कुछ। जितना भी कड़वा चीज सब खा लूंगा। मैं नहीं खा पाती सोनू भैया, मैं बिल्कुल नहीं खा पाती लाल मिर्च। हाँ लाल मिर्च, हरी मिर्च कितनी भी तीखी रहेगी खा लूंगी, पर कड़वी चीज वैसी नहीं खाती। मटर खाया करो सिस्टर। मटर तो खाती हूँ भैया, मटर तो मेरा फेवरेट है, आलू मटर की सब्जी। कहीं गलती से मटर तो नहीं लिख दिए? आप मटन लिखना चाह रहे थे ना? चिरायता फिर थोड़ा भी टेस्ट नहीं कर पाऊंगी। नहीं कर पाओगी। चिरायता तो सच में भैया बहुत ही कड़वा होता है। एक बार मार और खा के किसी तरीके से एक घुट पी थी। गांव में लोग देते हैं ना, पता नहीं कैसे, जब बुखार उखार ज्यादा खराब हो जाता है ना, अच्छा नहीं होता है। अर्जुन की छाल, चिरैता, पता नहीं क्या क्या घास भूस पका करके उसको काढ़ा बना के देते हैं कि पियो जबरदस्ती। रायता तो अच्छा होता है। कुछ नहीं, दूध दही मक्खन घी कुछ भी नहीं खाती वीर भैया जी, कुछ भी नहीं। बस दाल चावल रोटी सब्जी, बाहरी खाना कुछ भी नहीं। बस कभी कभार समोसा खा लूंगी बस, और कुछ कोई चीज ऐसी नहीं। रायता नहीं चिरायता। वीर भैया जी शायद नहीं समझे उस चीज को। चिरायता एक फीवर के लिए जड़ी बूटी होती है भैया, वो बहुत ही कड़वी होती है, बहुत ज्यादा। वो क्या होता है, वो फीवर जब ज्यादा होता है ना, जैसे अगर मेडिसिन से नहीं जा रहा ना, तो वो लोग देते हैं काढ़ा बना करके उसी का। वो बहुत ही जहरीला कड़वा होता है, अजीब सा, वो बहुत ही ज्यादा।
करेला का जूस फिर भी तो सही है, उससे ज्यादा कड़वा होता है। चिरैता जहर से कम नहीं है, बिल्कुल सच में अजीब, उसके एकदम सच बहुत ही ज्यादा कड़वा। अच्छा मुझे लगा रायता, रायता नहीं भैया, चिरैता, उसका नाम चिरैता है। बहुत कड़वा होता है वीर भैया जी, लेकिन फीवर कहीं भी हड्डियों में भी रहे ना, उसको भी निकाल देता है। सब पी भी नहीं पाते उसको। पी के देखो कभी, मुझको कह रहे हो? जान निकल जाए बेशक, वो मंजूर है। वीर भैया जी को एक दिन टेस्ट करा के दिखाओ, रवि भैया, सोनू भैया सॉरी, वीर भैया जी शायद पी लेंगे। हड्डी थोड़ी निकाल हड्डी थोड़ी निकालेगा भैया। हड्डी नहीं निकालता है, हड्डियों में जो बुखार रहता है उसको निकालता है। बहुत लोग नहीं खाते, टाइफाइड का बुखार बहुत खराब हो जाता है, कभी कभी उसमें मेडिसिन भी काम नहीं करती है, ये रह रहा कि जब तक खाओ तब तक आराम रहता है, फिर ना खाओ तो फिर हो जाता है। ऐसी अवस्था हम लोग पीते हैं चिरैता। हाँ आपने बोला नहीं, हड्डियों से फीवर निकाल देता है। हाँ हड्डी थोड़ी निकालेगा। हड्डी नहीं निकालता है, हड्डियों में से फीवर निकालेगा। सोनू भैया इस्तेमाल किए हैं, उनसे पूछो, वो विस्तार से बताएंगे उसके बारे में आपको। क्या पता फीवर की जगह हड्डियां निकाल दे। नहीं भैया ऐसा नहीं है, इस्तेमाल किया हुआ नुस्खा बता रहे हैं सोनू भैया, ऐसा नहीं है कि आपको ही पहले बता रहे हैं। आप कहीं डरना नहीं। हमारे भी होता होगा, नाम अलग होगा मेरे हिसाब से, हो सकता है भैया, ये बात राइट है आपकी। जैसे अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन हमारी तरफ चारों तरफ हमारी यूपी के साइड या जहाँ से सोनू भैया हैं उधर भी सब लोग इसी नाम से जानते हैं। यहाँ दिल्ली में भी इसी नाम से जानते हैं, मिलता यहाँ पे भी है। इसी नाम से मुझे मेरे ख्याल से वहां पे भी लोग जानते हैं, क्योंकि मेरे भैया कभी कभार लाते हैं। ये होता किसी को, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि क्या चीज होती है। हाँ जी।
वीर भैया जी बताओ, साधना दीदी का रिप्लाई आया कुछ? फिर मैं इस हिसाब से लाइव एंड करके फोन भी चार्ज मुझे करना पड़ेगा, इसलिए बोल रही हूँ।